हेलो एंड वेलकम टू बट्टा फास्ट। मैं हूं अहमद नकवी, मेरे साथ मौजूद हैं उस्मान समीउद्दीन। और मुबारक हो बहुत बहुत, पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में अपना पहला मुजाहिरा दिया पाकिस्तान ने। उस्मान, योर टेक अवे फ्रॉम दिस मैच, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? पाकिस्तान के पहले पॉइंट्स आ गए वर्ल्ड कप में। आई मुझे ये एक चीज अच्छी लगी कि पाकिस्तान ने एक बहुत ही कोई जबरदस्त किस्म की कंफर्टेबल जीत नहीं हासिल करी। थोड़ा सा स्ट्रगल करा, थोड़ा सा पुश करा, थोड़े से अनहेरेल्डेड प्लेयर्स इन द मिक्स आए, थोड़े से आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स वापस आए। तो आई लाइक द फैक्ट that they did not crush this. I like the fact that they looked a little bit rusty, but they came out ultimately with a fairly comfortable win. You like the fact that they didn't crush this? No, that they were that they looked rusty. I said I like the fact that they looked slightly rusty in the game because you don't want them peaking early, right? The whole point is that you don't want any side peaking. Like you want them to be. सवाल ही यही था ना कि मतलब एक तरफ था कि मेरे लिए था कि या तो आप हार जाए इनसे ताकि फिर आप वो 92 Get that out of the way. 2017 वाली, या जस्ट टेक दैट ट्रेन राइड टू 2009 और व्हाटएवर, या यू क्रश देम। मगर वो रेंगते रेंगते 36 पे 2 11 ओवर के बाद ये वो आई गेस आई मतलब इनफैक्ट लेट मी पुट इट दिस वे कि वो बाकी जो पूरा मैच था वो था जो पाकिस्तान में रहने की अजियत है कि पानी नहीं आ रहा, बिजली नहीं है, रोडें खराब हैं, 36 पे 2 हैं। एंड उससे कॉन्ट्रास्ट ये था कि अगर कल सुबह मैं उठूं और एक रैली चल रही हो कि जी माइनॉरिटीज को हक दें, या आपको पता चले कि जी सारे टैक्स चोरों ने अपना टैक्स भर दिया है, या आपको पता चले कि वो खलील रहमान कह रहा है कि औरतों की इज्जत करो, मैं औरत मार्च रखूंगा। That is the level of shock that I felt watching Saud Shakeel bat. Like that was something कि पाकिस्तान में तो ये नहीं होता यार, ये होता ही नहीं है हमारे मुल्क में कि एक बच्चा आया, उसका पहला वर्ल्ड कप का मैच है और उसने पहली बॉल से ही इज प्लेइंग विद इंटेंट, विद पॉजिटिविटी, और उसको ये नहीं कि यार ये मैं ग्लेन मैकग्रा की रूह को खेल रहा हूँ। मतलब ही इज जस्ट लाइक यार it's Netherlands. I'm gonna play this like I'm supposed to. That was crazy. And I have a soft spot for gritty Karachi left-handed batsmen, right? We all know this. Like I love Of course. I love my gritty Karachi lefty who plays spin like an absolute dream. But like I feel like he has been the most surprising aspect of this Pakistan side over the last 6-7 months. Usse pehle, and we've been hearing about this कि camp वैम्प में साउथ ने अपनी game proactively, मुझे सबसे हैरानकुन बात ये लगती है he's one of the guys who has actively tried to expand his game. आप अगर इनकी साउथ when he first came onto the scene test side में, तो इनकी strike rates अगर आप साउथ की देखते were like, he was known as being that gritty, doughty, 39.36 strike rate, 44, 39.65, 39. Wow, And these are all like, and these are substantial kind of innings, right? These are fairly substantial test innings. He was really like this gritty, no shot offered, I'm going to save Pakistan this test match. और वो अचानक से उसने पिछले 1-6 महीने में अपनी गेम ऐसी एक्सपैंड करी है. एंड वी कीप टॉकिंग अबाउट द पाकिस्तान वे, एंड आई ऑलवेज टॉक अबाउट इट विद अ लिटिल स्निगर कि यार ये क्या, हाँ चलो पाकिस्तान वे तो बहुत सारे वेज होते हैं, बट दिस गाय फॉर नाउ हैज टेकन इट टू हार्ट. एंड लाइक दिस इनिंग्स, people would say of course कि यार नेदरलैंड्स से ये थे वो थे, इतने उनके कोई बॉलर्स नहीं. वन, Netherlands are not just ye Netherlands. The Netherlands are a seriously improved side who are part of the Super League, who have picked up a lot of experience over the last few years, have been very good. And two, वर्ल्ड कप डेब्यू पे आप अंदर आते हैं, वर्ल्ड कप डेब्यू पे इंडिया में आप आते हैं, आपका बाबर चला गया, आपका इमाम चला गया, आपका फखर चला गया, आप आ रहे हैं 38 for 3. Like we've seen this story, dude, yes, many times. और ये स्टोरी हमेशा इसकी बैड एंडिंग होती है, ठीक है ना? या बेस्ट एंडिंग ये होती है कि आप टुक टुक करके आप, and I'm using that phrase very deliberately, टुक टुक करके आप 150, 170, 180 तक खींच लेते हैं आप स्कोर. No, this guy went at it and it came off, and like he had a little bit of luck. Everyone needs a little bit of luck at times. So it's just really good to see that he stuck to that way कि यार हम लोग ने कहा है कि हम लोग ऐसे खेलेंगे the Pakistan way, और हम लोग वाकई में वैसे खेलेंगे. मेरा एक कजिन है, तो वो ना बचपन से हबीब बॉयज स्कूल में पढ़ता था, और क्या कहते हैं क्लासिक क्रेडल ऑफ स्पोर्ट्स स्टार्स. यस, और वही था, वो स्पोर्टी था,
और उसकी यूनिब्राउ थी, उसकी अजीब गंदी वाली मूछें थी, साद एंड आलम उसके कजन उसके ओ लेवल्स में नहीं, वो आधा कराची वैसा दिखता है। ओ लेवल में उसके अच्छे ग्रेड आए, वो ग्रामर स्कूल में उसका हो गया ना, तो एक तरफ हम सब लोग बड़े परेशान थे कि भाई हबीब बॉयज से ग्रामर की जंप, दैट्स अ ह्यूज जंप। एक लेवल है। बट ग्रामर में आके ना उसके एकदम से ग्रोथ स्पर्ट हुआ, प्यूबर्टी छूट गई, जॉ बाहर आ गया, बाल शाल सेक्सी हो गए, ये वो, तो दैट्स बेसिकली नो वन वाज एक्सपेक्टिंग दिस। आई थिंक साउथ शकील का भी ये है कि ना वो एक हबीब बॉयज वाला था, आपको कहता है इससे कुछ खास नहीं होने वाला है, बट सडनली ही शोज दैट ही बिलोंग्स एट ग्रामर। आई फील लाइक कि क्योंकि एक तरफ तो ये कि आप शॉर्ट वॉट खेल सकते हो जो कुछ भी, जो भी बात कर रहे हैं कि आप 38 पे 3 पे आए हैं, और हमने पिछले 10 साल में तो यही देखा है कि फिर रेंगते रेंगते फिर वो भी 27 बॉलों पे 4 बना के आउट हो गए, और ये क्या वो क्या। What was amazing, and I have to give credit to Rizwan there as well, is that they were batting like there's zero pressure. And Yeah. as you said कि नेदरलैंड्स की टीम इतनी हल्की नहीं थी, बट आपके पास ज्यादा तजुर्बा है, आपके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है, क्लास है, which meant that you could be smart about it and start knocking Yeah. them around and then hitting those boundaries. And that's like इतनी अच्छी तरीके से रैशनल स्क्रिप्ट फॉलो करना एक पाकिस्तानी बैटर के लिए, एक यंगस्टर पाकिस्तानी बैटर। एंड देन द लास्ट पॉइंट इज कि जब उसकी हेलमेट का क्लोजअप दिखाते ना, तो बिकॉज ऑफ हिज मुस्टैच एंड हिज आईज मुझे लगता है कि मैं हफीज देख रहा हूँ, एंड इमीडिएटली देयर इज लाइक अ सेंस ऑफ के अबाउट होगा, एक थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट वेवनेस आ होगी, जाती है कि अच्छा या ये ये ओवर स्मार्ट होगा। नहीं इसमें एंड जस्ट द वेरी लास्ट पॉइंट ऑन दीस टू, तुमने बड़ा अच्छा मेंशन किया, रिजवान एक्चुअली प्लेड अ की रोल इन दिस बिकॉज शुरू में साउथ वाज अ लिटिल बिट स्क्रैची। एक उसने गली में शॉट खेला, थोड़ा सा ऊपर गया, एज प्लान मेकर, देन ही हैड दैट स्लिप पे उसने जो एज निकला व्हिच कुड हैव बीन अ कैच। Rizwan actually was looking fairly assertive from the very start, which very important for Pakistan कि Rizwan नंबर 4 पे उसने रन बनाना शुरू कर दिया है, अच्छे ठीक ठाक पेस पे रन्स बना रहा है, because Pakistan have had those issues at 4 and stuff, so it's good. But I'll do my misbah bit here and say, and I'll say it nicely, कि perspective थोड़ा रखना चाहिए, पहली गेम है, आपके और ज्यादा टफर टेस्ट आएंगे for sure. Sri Lanka and their spin attack will be a tougher test, 100%, and there will be more tests. So long may they continue playing like this. But it was really good to see the way they recovered from 38 for 3 today. It was just good to see them playing in that manner. So like good हमने कर लिया, अब actually we have a few more good to go to. What I think एक और जो बड़ी चीज जो सबको लोगों को टेंशन थी, हमने खुद बात की थी, शादाब का फॉर्म and then Hasan Ali coming back into this match, and they both looked in better touch than they've had काफी अरसे से। I think इसमें कोई ताज्जुब की बात भी नहीं है कि अगर पाकिस्तान के ये बॉलर्स अच्छा खेलेंगे तो हम सबको पता है कि we'll be doing well, but specifically हसन और शादाब इस तरीके से बॉलिंग कराते हुए आपको मिलता है कि जो दरमियाने ओवर्स हैं उस इनिंग्स में, there you can be attacking, which I feel is probably the big kind of bowling tactic in ODIs at this point. Yeah, definitely. I think Hassan ka, it was good to see Hassan just bowling smart, like not being taken for runs. Hassan like finding the length to bowl and getting some movement as well. Like Hassan was getting some decent movement, and also like Hassan ki ek jo sharpness hai na, jo game awareness uski hamesha se rahi hai, because I guess he has to make up for not being your typical kind of Pakistan fast bowler. Uski pace hai, but it's not that kind of pace. Uski build hai, but it's not that kind of build. So he's always had to like work at other aspects of his game. And so, he was the first guy to really try and bowl a bouncer to get that first wicket. And he got the wicket. So, that kind of sharpness was always there with him. He got some movement later on as well, which is nice to see. So Hassan, given Naseem's loss, Hassan is going to be absolutely like crucial for Pakistan. Or it was a good sign to kind of see him bowl well up front. And to kind of, I think he's also one of those confidence kind of bowlers. इतना streaky होता है ना, उसका जब mood उसका सही होता है, जब उसे confidence मिलता है, तो then he bowls better. I feel. So it's it'll give him some confidence. Yeah, go on. Yeah, no, मैं ये भी कहना चाह रहा था कि ना कुछ लोग कहेंगे कि भाई नेदरलैंड्स के खिलाफ बॉलिंग करके आप इतना खुश हो रहे हैं या बातें कर रहे हैं, बट मेरी एंड स्पेशली जो हम बट्टा फास्ट में पुराने मैचेस भी देख रहे हैं, मुझे बहुत अच्छी तरह अंदाजा हो गया कि पाकिस्तान का ओपोनेंट क्या है इज कंप्लीटली इररेलेवेंट. यू कुड बी प्लेइंग लाइक क्लाइव लॉयड्स वेस्ट इंडीज और
Papua New Guinea, Pakistan will be playing Pakistan, you know. And so Yeah. if they're bowling well, whoever they're bowling well against, that's a Yeah. good sign. और अगर उनसे नहीं खेला जा रहा है तो वो चाहे अच्छी टीम हो बुरी टीम हो, जो वो परेशानी की बात है. थोड़ा सा The famous Pakistani उस्मान, thing always is that they either rise to the level of their opponents if they're better, or they fall to the level of their opponents if they're supposed to be stronger. perfect segue, because today we're live and we have people commenting. And the first comment we got was from Hasan Ali, who said, not the Hasan Ali, I'm guessing. Oh, It seemed like a come on, classic yaar. Pakistan performance where they played down to their opponent, which is a great comment. But Usman, so I'm just going to ask some questions that the guests, like our audience is asking. Just quickly, you can give some answers. So Hassan again asked, what changes, if any, should Pakistan look to make with strategy and or personnel? None of either, I don't think. I think they Keep went to quick. There's a lot of them. Shadab is handy with the bat, gun fielder, vice captain. Since he's out of form with the ball, would be a good option to try out Osama Mir. Not yet. He's coming back into form with the ball. Shadab, that is. And I think there's a lot of And questions Nawaz about had a good changing game as around the well. side. Nawaz, by the way, Yes. had another good game as well. So Chamaz पूछते हैं, should Rizwan open and Fakhr at 5, Saud at 4, Fakhr not performing against new ball? no. I would leave the order as it is for a few games yet. Fair enough. And then Bharat Gupta. So a bunch of people are asking about, like, should Agha come back into the side? Yeah, अभी आपको doesn't have एक, it. I don't know what you feel. I feel like अभी आपने एक, it looks like a decent lineup. Not only did they win, but the thought process behind this lineup seems okay, seems fine. You may have to tweak for different opponents, I guess, a little bit here and there. But you know, let's see. Sri Lanka खिलाफ आप किसे खिलाएंगे, क्या कराएंगे? Maybe you want to change the balance a little bit, but I feel like you've pulled off a good win. You've ticked off some boxes that you were wanting to tick off beforehand. Play along, man. Play on. Yeah, I think ये बड़ी अच्छी बात की है कि आज जिस तरीके से जो लोग खेले, जो नहीं चले, जैसे अब बाबर आजम, I don't think anyone's panicking just yet, but No. थोड़ा सा टेंशन थी, फखर पे थोड़ी सी टेंशन है. But the fact, I think, like Rizwan's innings was such a breath of fresh air. I think Saud Shakeel की वजह से, मतलब वो ये कि अगर ये लोग इतना बहुत कर रहे हैं, तो we can pull it off against most teams. I think that's a fair kind of assessment. Moving forward, go on. No, I was just going to say that we actually didn't get down to discussing Shadab's bowling, which maybe that's the way we move Let's do forward. it, yeah. Kind of ended with it. Like, he didn't look like 100% Shadab, but he bowled. I felt like he probably bowled the best over that he has bowled. His 7th over was the best over I've seen him bowl for, like, I don't know, like maybe a year. Usne itni one-day cricket nahi kheli hai, but it was the best over I've seen him bowl for a long time. He still bowled, like, full tosses. Uske haath se nikal rahi thi abhi tak. But I just felt it was really encouraging that he was doing things that we know Shadab can do. The kind of turn that he was getting, ek do usne googly bhi try kari. Hopefully, it's the first step to him kind of getting some of that bowling confidence back. I think एक कल बड़ी दिलचस्प बात की थी ना कि शादाब को आप सिर्फ एज अ बॉलर नहीं देख सकते, और अगर आप एज अ बॉलर देखते हैं तो आपको अंदाजा करना होता है कि ही इज प्रोबेबली नॉट योर मेन स्पिनिंग ऑप्शन. ही इज फार बेटर एज सेकंड थिंग. बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक कि जब शादाब की बॉलिंग चलने लगती है, देन ऑल द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ हिज गेम गो अप अनदर लेवल. लाइक समटाइम्स जब उसकी बॉलिंग नहीं चल रही होती है, हिज फील्डिंग एंड हिज कैप strategy or batting makes up for it. But I feel the reverse happens when his bowling goes well, then everything else also accentuates. Like, he's just electric on the field. तो उस नजरिए से भी उसकी bowling का चलना बड़ा जरूरी है. And it's no surprise that he played a good innings and then came out and did well with the ball. Like, these things go hand in hand, right? He played that innings first, saved Pakistan, and then came out and bowled like he did. So, just good to see. And I think that's the big thing with tournaments as well, ना कि वो आपको पीक किस टाइम पे करना है. और वो जो शुरू में बात कर रहे थे कि आप ये नहीं चाहते कि पहले ही मैच में आप बिल्कुल टॉप पे चल रहे हो, because there will be things further down the line as well. And yeah, like, I think this was. I mean, there's a lot of banana peels throughout this tournament. I think Sri Lanka is a genuine proper. Like, I've noted it as a match we're likely to lose, simply because we're most likely to lose to the West Indies and Sri Lankas and beat the Englands and New Zealands. Although I think Pakistan have a good record against Sri Lanka in World Cups, I think.
Yes, we do. Yes, we do. I But might be making that up, when but was the 2019 no? We में I have think match abandoned हुआ था, खेला नहीं गया था because of rain. because of rain. 20 Yes, 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 yes. yeah, 2015 में they didn't play. 2011 में we beat them at home, which was a big win. Uh, Yeah. and yeah, so that's the last time I think they played actually a proper match that wasn't rained off. But Asia True. Cup, great game. That's Yeah. going to be top of mind for some guys, I guess. So Yeah, and I think वही श्रीलंका के पास जो उस मैच में भी उन्होंने जिस तरीके से हमें हराया था is that their sum was greater than their parts. Like when they are bringing everything together, तो उनके पास इतने सारी different options होती हैं to do things yeah, to any team, but particularly Pakistan. हम लोग stress हो जाते हैं. But ठीक है, so that's it for this very quick but a fast review of Pakistan's match. जाने से पहले उस्मान कल इंडिया ऑस्ट्रेलिया कल नहीं पर any thoughts on the home team and what is probably the two of the favorites playing each other? my thought is Barish. Like the forecast looks bad, I think. I think the forecast looks Really? The last I checked, the forecast in Chennai looked pretty grim for Sunday. I don't know if we're going to get a full game, but these things change. So we might be back. which translates into day 2 of this World Cup was still really sad. आज भी वही ZTBL 2020 वाला मैदान लग रहा था. And I thought कि हैदराबाद में तब भी पाकिस्तान को देखने शायद लोग आ जाएं या कुछ हो, but there was nothing. Let's hope this tournament picks up. It's really boring in there's 2 games tomorrow. Aspect. 2 games tomorrow, double header. Afghanistan play first, and then Sri Lanka, South Africa, which should actually be not Sri Lanka, South Africa. We should know this. Well, you should know this. I should the know much this. chiller guy on this, right? But you don't do this for a living. आज भी सोच रहा था कि मतलब it genuinely I think ground में हॉलैंड के ज्यादा फैन थे बनिस्बत पाकिस्तान के, which is obviously the neighboring country. कल एक्चुअली दो बहुत ही जबरदस्त गेम है, अफगानिस्तान बांग्लादेश and then South Africa Sri Lanka. They're both really they should be good games. Both of them should be good games. Yeah. No, I think this is one of the things I like about this format also is कि आपको क्योंकि सब एक दूसरे से खेल रहे हैं तो at least एक context मिलता रहता है. You get a lot of these different matchups that those groups would end up losing out on. But anyways, ये था हमारी तरफ से. पाकिस्तान ने अपना पहला मैच खेल लिया है, पहली बर्तरी हासिल कर ली है. हम बाकी सारे 8 मैचेस में भी आपके साथ होंगे. Probably हर दफा हमारा मूड इतना अच्छा नहीं होगा. और अगर वीजा आ जाए, जो उस्मान को जलील तो कर रहे हैं इंडिया वाले, पर उस्मान फिर इंडिया से बराह रास्त दीपिका और रणवीर को हमने लाइन अप किया हुआ है, तो वो भी शो कर होंगे. मेरी वेलकमिंग पार्टी में वो दोनों. Oh, of course. Let me just check if there is any. काफी लोग कह रहे हैं कि आगा को ले आओ, उसामा को ले आओ, फलाना ढिमकाना. तो ये सब हम लोग अगली एपिसोड पे करेंगे. कहाँ ले आओ? 11 की टीम होती है, कहाँ खिलाए उन्हें? ठीक है. All right. Thanks, Usman. Thank you everyone for watching, and we'll catch you after.